Okay, Prashal, let's start your snap interview on signals and system for lecturer post in UPPSC. Please introduce yourself. A very good evening, ma'am. This is Prashal Mishra from Kanpur, Uttar Pradesh. I completed my graduation from Dr. B.R. Ambedkar University, Agra, and then I completed my post-graduation from Harcourt Butler Technical University, Kanpur. And since then, I'm preparing for government exams. Okay, Prashal, first of all, tell me, what is impulse signal? Ma'am, it is an impulse signal is basically an infinite amplitude and for a very short duration signal that is basically used for testing of devices. What kind of testing do we do by impulse signal? What characteristic of the system can be determined by impulse signal? Ma'am, I'm not sure about it. Okay, can you tell me the importance of this signal? Ma'am, basically we use this impulse signal to test a device whether it's working appropriately or not, because it's a very short duration signal. So if a device is working in that particular duration, then it will work on various other signals also. Okay, but no, what characteristic can be determined by this test? How can you say this is performing for koi system hai, if it is performing for impulse signal, then you are saying it will perform for every other signal? Ma'am, because it What will you're saying. satisfy the LTI system properties. Because convolution of any signal with the impulse signal will give the respective signal as the output. So we can say that it will be an LTI system if it satisfies this property. So you are saying that if a system, I have a system that is testing with impulse signal properly. Okay? You are saying this is how we determine if it's a LTI system or not. What is the definition of LTI system? Ma'am, it must be linear time invariant system. And for linear system, it should be like it should follow the two principle, homogeneity and superposition. And for time, sorry, ma'am. Yeah, continue. And for time invariant, like we have to check whether the displacement in the input time also corresponds to the same displacement in the output time duration. Then we can call it as the. Okay, and what is the connection with impulse signal here? LTI signal और impulse signal का क्या connection है आपस में? Let's say I have a system and I can determine that signal in the form of delayed impulses. What will be that signal called? That system will be called? क्या बोलेंगे इस system को? Ma'am, that is like we can express a system in terms of delayed impulses. So it will be a impulse train. So no, I'm asking, I have a system that I can represent in as a linear combination of delayed impulses. I'm asking what that system will be called. Okay, can you tell me the few application of LTI system? LTI systems are any example where you can see the application of LTI? It's used in all the transforms, like when we do frequency domain analysis, we mostly prefer the LTI systems. Okay, can you tell me why we prefer LTI system, why not any other system for analysis? Ma'am, is it related to the eigenfunctions?
What is eigenfunction? You're saying Because it is analysis, if we have to do analysis of a system, then mm, sorry, ma'am, I can't recall right now. You don't know about eigenfunction too? Sorry, ma'am. Eigenfunction क्या होता है वो भी आपको नहीं पता है? Ma'am, eigenfunction is the one when, like, if the input signal is given and we get the output signal like in terms in some get as a constant multiplied of input, then we call that output as the eigenfunction of that. Okay, let's say I have a signal e to the power minus j omega t into ut. Is that an eigenfunction or not? E to the power j omega t. Yes, minus j omega t into ut. Okay. Is that an eigenfunction or not? No, ma'am, because it's multiplied with ut, which is a right-sided signal. So it cannot be like constant times of some input signal. The input signal can also be like both-sided or left-sided signal. So this cannot be. Okay. Okay, tell me about BIBO stability and asymptotic. BIBO says stability and Asymptotic stability. uh, sorry, ma'am, I didn't hear it. Asymptotic stability. Asymptotic. Ma'am, in BIBO stability, if we get a bounded output for the bounded input, then we call that system as a BIBO stable system. And for asymptotic, I don't know, ma'am. Okay, what is the definition of BIBO stability? A condition, I mean. Condition of BIBO stability. In terms of impulse response, if I'm asking, let's say I know the impulse response of a system. In that terms, what is the condition of BIBO stability? Impulse response should be absolutely summable and also causal. Okay, Prashal, write down a signal yn is equal to Okay, ma'am, yn is equals to? summation, Yes, ma'am. and the value of k goes from minus infinity to n. N. Okay, that is the limits of summation, and under the summation I have the term xk. Okay, can you tell me about the stability of this signal? First of all, show me the signal that you have written. This one. Minus infinity to n, right? Can you tell me about the stability of this signal? This system, I mean. Ma'am, it will not be stable system because it has the minus infinity term in its limit. So for any input, like if we take k as some value, it will always like summation of infinite terms. So it will never be a BIBO stable. Like for an input, a bounded input, we will not get an output that is bounded. Okay, and what about the system condition? Like, is it a static system or dynamic system? So static systems. Ma'am, it is static system. What are static system, Prashant?
which depend upon the present values and not on the uh, past or future values. Past values basically. Okay, No, so ma'am. in this case, let's say I have a value n, I'm calculating at 0. Okay, so I'm calculating the summation of a xk signal from minus infinity to 0 at 0. Y 0 पे अगर मैं करूँ calculate, तो my summation will be minus infinity to 0 x of k, right? If I have to calculate the value at y is equal to 0. Now, for calculating this value, I need values from minus infinity to 0. So Yes, how are you ma'am. saying this system is static? Yes, ma'am. It will not be static. It will be dynamic system. Dynamic system. Okay, Prishal, let's conclude your interview. Yes, ma'am. See, Prishal, first of all, so agar, if I'm asking you a question and you don't know the answer about it, just say so. Say that you don't know. It's okay to know. It's not been possible to know everything about the subject, right? There will always be few topics that you won't be comfortable in. So it's always a good idea to just say that I'm not comfortable in this topic or I don't know about this topic. Please move on to another topic. Then the interview will comfortably move to another topic. But अब अगर आप बोलोगे ही नहीं, आप अपना इंटरव्यू बोरिंग कर रहे हो, राइट? आप ब्रेक्स दे रहे हो अपने इंटरव्यू के अंदर. And that break is आपके इंटरव्यू के माइंड में क्या जा रहा है? From that break that you don't know about the subject, right? That will be a negative point in your interview. So keep that in mind. And secondly, I feel कि अभी थोड़ा सा सब्जेक्ट पे वर्क करने की जरूरत है. अभी कॉन्फिडेंस नहीं आया है अपने सब्जेक्ट का ना, कि अभी थोड़ी थोड़ी चीजें मिसिंग है, गैप्स हैं अभी सब्जेक्ट में, राइट? हैव यू प्रिपेयर्ड फुली? आपने प्रॉपरली प्रिपेयर कर लिया है सब्जेक्ट के लिए? नो मैम एक्चुअली मैंने मतलब अभी पूरा नहीं प्रिपेयर करा है. आई जस्ट वेंट थ्रू इट. लाइक मैम, इससे पहले मैंने IITs के इंटरव्यूज दिए थे, तो उसमें एक जो मैम होता है ना कि दे ऑलवेज पुश यू लाइक कि नहीं नहीं निकालो निकालो, फाइंड दिस आंसर एनी हाउ गो इट. तो आई वाज लाइक इन दैट मोड कि आई वाज अगेन एंड अगेन स्ट्रगलिंग. आई शुड हैव लाइक सेड सॉरी. मतलब मैं उस जोन में नहीं आ पा रही थी कि हाँ ऐसे एकदम नहीं, से then sorry. that is okay. It's always a good idea to मतलब आपको पुश करना चाहिए. आपको ऑब्वियसली वो फाइंड करोगे ना, तो इट्स अ गुड आइडिया. बट अगर वहां पे कोई भी आसपास कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, लाइक एक होता है ना कि आप या तो इनपुट दो कि हाँ ठीक है ये हो सकता है ये हो सकता है, बट आप क्या कर रहे हो ना, अगर मैं आपको बोल रही हूँ तो आप शांत हो जा रहे हो एकदम. You're हाँ not हाँ. saying anything. That will be negative. आपने आपको पुश करना और मतलब उस कि हाँ आप कैलकुलेट करने की कोशिश करो, दैट इज नॉट रॉन्ग. अगर आपको आइडिया लग पा रहा है ना अपने माइंड में, हाँ मुझे थोड़ा सोच के समझ में आ जाएगा, दैट इज ओके, फिर आप करो. बट अगर वहां पे बिल्कुल भी आइडिया नहीं लग रहा किसी टॉपिक को लेके, लाइक आइगन फंक्शन अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ, देखो आपने आंसर कर दिया आइगन फंक्शन का मुझे, बट वो बहुत ब्रेक लेके आपने किया है. अब थोड़ा थोड़ा आइडिया देते रहो ना उसके बारे में, तो इट सीम्स कि हाँ ठीक है आपको पता है, ओके, राइट सो प्रशल? मतलब थोड़ा थोड़ा सा मैं बोलती रहूं, मतलब बीच में रुकूं नहीं. थोड़ा थोड़ा, हाँ मतलब आप इनपुट कुछ तो इनपुट दो, आप बिल्कुल ब्रेक मत लगाओ, लाइक कुछ तो बोलो. एटलीस्ट जस्ट से लेट मी थिंक, दैट विल आल्सो बी इनफ. है ना कि आप गिव मी 2 to 3 minutes, दैट इज पॉजिटिव. थोड़ा पॉजिटिव लगता है बोलने में, राइट? अगर आप बिल्कुल शांत हो जा रहे हो, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आप शांत होकर नीचे देखने लग जाओगे, तो वो समझ ही नहीं आएगा ना कि आपको पता है कि नहीं पता है. यस मैम. थोड़ा सा बस अभी थोड़ा सा एक बार और रिवाइज करो सब्जेक्ट को. नॉलेज है, ऐसा नहीं है कि नॉलेज नहीं है, बट अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने का टाइम लगेगा. एक बार गो मैम थ्रू कर लो सब्जेक्ट के. मैम जैसे अगर किसी चीज में मुझे डाउट आ रहा है कि वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, एंड तो मैम उस चीज में सिंपली जो आ रहा है मन में वो बोल देना बेटर होगा, या फिर मतलब आप अगर वो बोल गलत दो. हुआ या फिर यू सॉरी बोलना. यू कैन से दैट आई एम नॉट वेरी श्योर बट आई थिंक दिस शुड बी द आंसर. आप इस तरीके से उसको वो कर सकते हो. ओके ठीक है? मैम. अगर आपको मतलब बहुत ज्यादा डाउट आ रहा है ना और आपका बोलने का भी है, तो उसको थोड़ा सा इस तरीके से बोलोगे तो दैट विल बी बेटर. बिल्कुल ना कुछ बोलने से बेटर है, राइट? हम्म. बट एडमिट इट. इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू एडमिट इट कि दैट यू डोंट नो. अगर आप अपने गलत आंसर को सही प्रूव करके बोलोगे ना, तो वो नेगेटिव हो जाएगा, ओके राइट? ओके. डाउट आ रहा है, बोल दो कि मुझे डाउट है थोड़ा सा, बट आई थिंक दिस शुड बी द आंसर. यस
मैम जो आपने पहला क्वेश्चन पूछा था अबाउट द इम्पल्स सिग्नल, मैम उसका आंसर क्या होगा? What was the question I asked you? मैम कि इम्पल्स क्यों यूज करते हैं, मतलब पहले तो आपने पूछा था Okay, कि okay. The importance of impulse signal, right? See, impulse signal का क्या होता है ना? If I take the Fourier transform of impulse signal, what will be the Fourier transform of it? कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, राइट। सो कांस्टेंट का मीन्स क्या है? अगर मैं ओमेगा की टर्म्स में देखो, फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में देखो, तो दैट मीन्स कांस्टेंट मीन्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, right? So basically this is the only signal that is defined from minus infinity to infinity and also giving us the constant value. मतलब मेरे किसी सिग्नल पे that won't do any other effect. मतलब अगर जैसे हम कॉन्वोल्यूशन क्या करते हैं, व्हाट इज कॉन्वोल्यूशन? कि हम एक सिग्नल हमने xt दिया and I have calculated the impulse response of a system and I convolve this signal with xt, तो मैं yt निकाल लेती हूँ। तो yt क्या देता है कि मुझे बताता है xt के बारे में बताएगा, राइट? ht के बारे में मुझे कुछ नहीं पता चलेगा, मतलब मुझे xt की इंफॉर्मेशन चाहिए कि xt का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, राइट? सो दिस इज द बेस्ट सिग्नल। ht जो है इम्पल्स रिस्पॉन्स सिग्नल है, ये बेस्ट सिग्नल होता है कन्वॉल्व करने के लिए। कन्वोल्यूशन से क्या कर रहे हैं कि एक सिग्नल की हेल्प से मैं दूसरे सिग्नल की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता कर रही हूँ, राइट? मैम तो बेसिकली ये यूज करके हम लोग मतलब अपने जो इनपुट सिग्नल के बारे में सब कुछ पता कर पा रहे हैं, एग्जैक्टली क्योंकि बिकॉज ये सिर्फ एक ये कांस्टेंट वैल्यू है पूरी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट में। वैल्यू है। ये कुछ आपके सिस्टम के साथ कुछ आपके इनपुट के साथ कुछ चेंज करेगा ही नहीं, राइट? इट्स गिविंग अ कांस्टेंट वैल्यू एंड फ्रॉम ऑल हम्म सारी फ्रीक्वेंसी पूरी फ्रीक्वेंसी डोमेन में डिफाइंड है। ऐसा हम्म भी नहीं है कि कहीं पर डिसकंटिन्यूटी आ रही है, राइट? So this is हम्म the best response for us to analyze our system. और LTI सिस्टम क्या होता है ना, LTI सिस्टम के अंदर हम क्यों बेस्ट प्रेफर करते हैं? बिकॉज एनी LTI सिस्टम कैन बी इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ डिलेड वर्जन ऑफ माय इम्पल्स सिग्नल। मैं किसी भी LTI सिस्टम को इम्पल्स सिग्नल की फॉर्म में आराम से डिफाइन कर सकती हूँ, और अगर इम्पल्स सिग्नल की फॉर्म में डिफाइन हो गया तो देन फॉर मी इट इज इजी टू एनालाइज माय सिस्टम, राइट? यस क्योंकि मैम। मैं किसी भी फंक्शन को इसके साथ कन्वॉल्व करूंगी, आई विल गेट द सेम रिजल्ट। कि दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ LTI सिस्टम। और हम क्या करते हैं ना, हम सबसे पहले आइडियलाइज कंडीशन पे वर्क करते हैं प्रशल। लाइक आई डू एनालिसिस ऑन LTI सिस्टम बिकॉज इट्स इजी टू एनालाइज इन मैथमेटिकल फॉर्म एंड देन वी कैन टेक assumption फॉर आवर रियल लाइफ एग्जांपल्स। रियल लाइफ में मेरे पास हमेशा लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम नहीं मिलेंगे, हमेशा आपके पास नॉन लीनियर भी होंगे, टाइम वेरिएंट भी होंगे। देन आई टेक इन assumptions अकॉर्डिंग टू आवर एनालिसिस। पर अब मैं जो एनालिसिस करूंगी ना, दैट आई विल डू इन आइडियल एनवायरनमेंट। हम हमेशा यही करते हैं ना, हर चीज में जब भी एनालिसिस करते हैं, वी टेक इन आइडियल कंडीशंस एंड देन वी एनालाइज अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। ठीक है, दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ LTI सिस्टम। एंड मैम इसको जैसे एनी अदर बहुत बार क्वेश्चन? मैंने सुना है कि इम्पल्स को एज अ टेस्टिंग सिग्नल यूज करते, तो जो ये आंसर दिया था क्या ये सही नहीं है? या दैट योर आंसर वाज करेक्ट। हम इम्पल्स सिग्नल को ना इसलिए करते हैं, थोड़ा सा उसे थोड़ा बेटर आंसर कर सकते थे, बट जस्ट वही थी आंसर की। जैसे इम्पल्स सिग्नल क्या होता है ना, आप सिस्टम पे लगाते हो। सी, इम्पल्स सिग्नल क्या है कि आपने एक इंस्टेंट पे लगाया एंड देन वो सिस्टम आपका इनपुट एकदम आपने वापस ले लिया, राइट? एकदम लगा और लगा। तो आपने जो सिस्टम पे जैसे ही लगाया ना, एक ट्रांजिएंट्स होते हैं, आपने कंट्रोल सिस्टम में पढ़ा होगा, तो यस सिस्टम मैम। गेट ट्रांजिएंट्स। तो वो ट्रांजिएंट्स आपके डाई आउट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इफ द सिस्टम इज एबल टू रेजिस्ट दैट शॉक और नॉट, वो हैंडल कर पा रहा है वो शॉक। कई बार ऐसा होता है ना, आप सिस्टम को एकदम झटके से कुछ चीज हो गई, देन द सिस्टम विल नॉट बी एबल टू टेक इट। तो आपका सिस्टम वहां हम्म पे खराब हो गया, वो नहीं झेल पा रहा है इम्पल्स सिग्नल को। सो दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माय सिस्टम कैन बी डिटरमाइंड बाय इम्पल्स सिग्नल। यस मैम। ओके, एक और क्वेश्चन था, मैंने स्टेबिलिटी का आपसे एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी पूछी एसिम्प्टोटिक, यस मैम। थी। बीबो स्टेबिलिटी इज जीरो स्टेट कंडीशन स्टेबिलिटी। लाइक मेरी स्टेट कंडीशंस जो है ना, वो जीरो है। सिर्फ इनपुट के ऊपर मैं बात कर रही हूँ कि इनपुट अगर मेरा बाउंडेड है, देन द आउटपुट विल आल्सो बी बाउंडेड, देन माय सिस्टम विल बी स्टेबल, दैट इज बीबो स्टेबिलिटी। बट अगर मैं कंडीशंस की बात करूँ कि मेरा इनपुट है ही नहीं अभी,
अभी मेरा Like, इनपुट नहीं है, पास्ट के जो चीजें हैं, जैसे कैपेसिटर की बात करूं कि पास्ट के जो चार्जेस हैं वो डाई आउट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, that will be called my asymptotic stability. In that case, input will be 0. this one. Okay. In this Any other case, question, ma'am, Kushal? in asymptotic stability, basically जब हमारे पास previous inputs already present हो, जैसे कि capacitor already charged हो, तब हम ये नहीं, discuss मतलब करते हैं. कोई भी स्टेट कंडीशन हो, हाँ, पहले Okay, मेरे this पास is basically पास्ट general. इनपुट कुछ पड़े हुए हैं. Okay, so it is basically general stability condition. जनरल स्टेबिलिटी, या विदाउट एनी इनपुट मेरा सिस्टम ठीक पड़ा है कि नहीं पड़ा है, दैट इज एसिम्प्टोटिक इन लेमन लैंग्वेज. Okay, okay. ओके Yes, ma'am. ओके प्रशल, ऑल द बेस्ट. Yes. Thank you, ma'am.